start with the greatest name of Almighty Allah. We are heartily delighted to have the honored guest here to participate and share in such a matchless and colorful function hosted by Mujaddid Al-Fisani Silsila Ta'aleem, Tarbiyah Focused Education. Today is 22nd of Jamad Sani, 1439 Hijrah, 11th March 2018. We are intensely grateful of magnificent Allah Subhanahu wa Ta'ala who gave us opportunity and strength to arrange such graceful and dignified event of annual prize distribution. We hope that everywhere will find something of interest, something to reflect on, something to appreciate, and something to value in it. May Allah bless us with true success and prosper our Mujaddid Al-Fisani by leaps and bounds. Ameen. He is one, the only one. Like him, there is none. He is great, greatest of all, knows everything, big or small. Allah, the divine being, the almighty, the powerful, omnipotent and supreme. Tu jaleel hai, tu azim hai, tu kareem hai, tu raheem hai. Teri ibtada hai na intaha, teri shaan jalla jalala. Brilliant Al-Fisanians will bless us with recitation of Holy Quran with translation. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Our Lord, you have not created all this without purpose. Glory to you. Give us salvation from the torment of the fire. Our Lord, verily, whom you admit to the fire, indeed you have disgraced him, and never will the wrongdoers find any helpers. Our Lord, we have heard the call of Muhammad
you promised unto us through your messengers and disgraced us, need on the day of Qiyamah, for you never break promise. ऐ हमारे परवरदिगार, आपकी कारखाना आलम बेकार पैदा नहीं फरमाया। आपकी जात पाक है, हमें दोज़ख की आग से बचा लीजिए। ऐ हमारे रब, जिसे आपने जहन्नुम में डाल दिया, उसे रुस्वा कर दिया। ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। ऐ हमारे रब, बिलाशुबा हमने आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुना और हम दिल से ईमान लिया। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ फरमा दीजिए और नेक लोगों की सी मौत अता फरमाइए। ऐ हमारे रब, जिस नुसरत और उखरवी निजात का तूने हमसे अपने रसूलों के जरिए वादा फरमाया है, हमें उससे बहराबर फरमा और हमें क़यामत के दिन रुस्वाना फरमाना। बेशक आप अपने वादे के खिलाफ नहीं फरमाते। सदक़ल्लाहु